Good evening. Good evening, sir. Thank you for taking the time to speak with me today. As part of my research on climate communication in newspapers and exploring how they shape public understanding of climate change, I'm taking this interview. And today I have with Dr. Manoj Thakur, who is a very accomplished environmental professional with over 16 years of expertise in environment and natural resource management. And his work is really quite impressive. It spans from key areas such as biodiversity conservation, waste management, community engagement, and green energy. He is currently serving as an assistant professor of environmental sciences at Vallabh Government College, Mandi, and he has previously held significant roles, which includes State Project Officer for the UNDP India Secure Himalaya Project, Environmental Specialist for Swachh Bharat Mission, and Environment and Scientific Professional at the State Center on Climate Change, Himachal Pradesh. Dr. Thakur holds a PhD in ecology and environment and has contributed to numerous research publications and actively engages in policy development, consultancy, and capacity building initiatives related to environmental sustainability. That's quite an impressive work, sir. And Thank you, ma'am. Thank you. welcome to this interview again. And I'm sure, given your expertise in environmental science, I'm eager to gain insights from an environmental expert point of view. I appreciate your time and look forward to your thoughts. Let's dive in straight to the interview with the first question that I have for you. How do newspapers in Himachal Pradesh typically frame climate change issues? Yeah. Ma'am, I think in Himachal Pradesh, the newspapers, they typically frame climate change issues with a localized lens. They mainly focus on the direct or immediate impacts of climate change in the local on the local agriculture or local water resources, means what are the immediate consequences, what are the immediate impacts, and what could be the immediate solutions. So they are focusing like that only. The long term impacts and what could be the long term sustainability measures, what mitigation or adaptation strategies we should focus on, that are often neglected. And one more thing, the scientific backup of the news that they are giving is often lacking. So what are the scientific reasons behind any climate related phenomenon? For example, they are reporting erratic rainfall patterns, or there are extreme weather events. So how they are related to climate change, that scientific data or that scientific backup is often lacking. Okay, sir. Coming to the next question, do you think newspapers present climate change as a serious and urgent issue? Why or why not? In terms of their direct impacts, Yes, sir. on agriculture, on water resources, or like they talk about disasters, they do pose it as a serious issue. Extreme weather events, they are captured with localized impacts, but the urgency of the crisis and the comprehensive view that is required, or the urgent call of action that is needed, that is lacking in these reportings. Okay, Yeah. sir. Wonderful, sir. What, according to you, should be the responsibilities that newspapers must have in reporting on climate change in Himachal Pradesh? I think climate change is the most pressing, and it is the most important environmental issue of 21st century that we all know. It is not a local issue. It is not a regional issue. It is a global issue. Yes, sir. So the newspapers, they should report climate change as a global crisis that has far-reaching consequences. Number one.
that are happening, those events are related to climate change. How climate change is responsible for such type of things, highlighting both their short-term as well as long-term impacts, as well as what should be the solutions, short-term as well as long-term. Then they could also focus on amplifying the local voices. जैसे फार्मर्स से बात की जा सकती है, साइंटिस्ट या एकेडमिशियन से बात की जा सकती है, कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको जो है फर्दर डाइसेमिनेट या प्रोपेगेट किया जा सकता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के केस में जो है लोकल जो रीडर है बेसिकली उनके साथ एक पर्सनल जो कनेक्ट है वो डेवलप करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। बहुत ज्यादा साइंटिफिक देंगे तो वो भी लोग समझ नहीं पाएंगे, और डायरेक्ट इम्पैक्ट्स की बात करेंगे तो उसको भी क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर पाना उनके लिए मुश्किल है। तो दोनों चीजें जो हैं वो एक वेल बैलेंस्ड मैनर में आई थिंक होनी चाहिए। It's how can newspapers make climate change information more accessible and engaging for the public? I think the most important thing is language. So the language should be very clear and it should be relatable. न्यूज़पेपर किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं, किसी लोकल लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। बट मेन चीज ये है कि जो रिपोर्टिंग है दैट उसमें जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो सभी की समझ में आने चाहिए। बहुत ज्यादा जो हाई फाई वर्ड्स हैं या हैवी वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हम एज सच यूज ना करें। मतलब जो लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड टू द मासेस। Second, storytelling techniques could be used by connecting the scientific data with the reader's daily lives. Means how the climate change or the phenomenon that are due to the climate change, they are related to our daily life, how they are impacting our daily life, or how our actions that we are doing on day-to-day basis, they may be responsible for climate change. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल्स इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, चार्ट्स, पिक्चर्स, क्योंकि जो पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं या इन्फोग्राफिक्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं किसी भी न्यूज को। तो इस तरह की काफी सारी स्ट्रेटजीज हैं जो यूज की जा सकती हैं। Wonderful answer, sir. Do you think newspapers write enough on local, regional climate change impacts, or does it prioritize national impact issues? मैम इसमें दोनों हैं एक्चुअली, बोथ साइड्स आर देयर। इट डिपेंड्स about which type of newspaper we are talking. Since climate change is a global issue, so often generally they tend to prioritize it as a national issue or global issue with long term impacts, जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं। बट जो छोटे न्यूज़पेपर हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। सो वो लोकल जो इम्पैक्ट्स हैं या जो लोकल उसके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जो लार्ज न्यूज़पेपर हैं, क्योंकि दे हैव लार्ज ऑडियंस रीच, so they mainly focus on global aspects or national or such type of aspects, but the local newspapers they focus on local impacts. उसके कुछ reasons भी हैं। reasons ये हैं कि एक तो resource limitations हैं, may the staff strength may be low in case of small newspaper, और जो climate change related issues हैं उनकी जो scientific complexity है that is not very easy to understand for every journalist, so that could also be one of the reason. However, local reporting is required to relate the climate change or its impacts with the day-to-day life, as I earlier mentioned. That's a very insightful answer, sir. Coming on to the next question, what do you think are the biggest challenges that journalists face when covering climate change in Himachal Pradesh? I think the first and the foremost challenge is the complexity, scientific nature, and the technical nature of this climate science. So, without proper training or without proper, जब तक उन्हें पता नहीं होगा जर्नलिस्ट को, it is not possible for them to report these issues
with that much efficiency or that much clarity. So one thing is that then specialized trainings to journalists on climate change or environmental issues is often lacking. So that is a second challenge. Then there may be pressure to report more immediate or more sensational matters. So climate change may not be that much sensational sometimes. So that may also be the reason. Then there is a perception among people that climate change is a very distant or a very secondary concern. They think that it will impact, but it will impact our future generations and not us. So that may also be one of the reason. There may be political pressure, there may be uh, access to resources. So such type of reasons may be there. Okay, sir. Coming on to the next question. In your experience, sir, can you recall any particular positive or weak examples of climate change reporting in Himachal Pradesh newspapers? I'm not specific as such, but generally Hmm. जैसे पॉजिटिव साइड की हम लोग बात करते हैं, तो जो लोकल वॉइसेस हैं Hmm. या जो डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन द साइंटिफिक फाइंडिंग्स एंड द इम्पैक्ट्स ऑन कम्युनिटीज, उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं. जैसे हम लोग बात करते हैं रेनफॉल पैटर्न्स की. हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हम लोग एप्पल क्रॉप की बात करते हैं कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द चिलिंग आवर्स ऑफ द एप्पल. इसके बारे में आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में. फिर हम लोग ग्लेशियर्स की बात करते हैं. तो ग्लेशियर्स जो हैं वो रिसीड कर रहे हैं, उनका जो स्नो का मास बैलेंस है वो कम हो रहा है. सो हाउ दीज ग्लेशियर्स आर इम्पैक्टिंग आवर वाटर रिसोर्सेज. जो हमारे रिवर्स है, नदी नाले हैं, उसमें जो वाटर का लेवल है वो किस प्रकार से फ्लक्चुएट कर रहा है. ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं. और जो वीकर साइड है, तो जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं विदाउट सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट और विदाउट साइंटिफिक डाटा, तो काफी एब्रप्ट हो जाता है और उसको डायरेक्ट अपनी लाइफ से रिलेट कर पाना या समझ पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वो एक वीक पॉइंट हो सकता है. जी सर. Sir, do you think that newspaper coverage has ever influenced or will influence government policies on climate change in the region? मैम, मीडिया डू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, Hmm. not solely newspaper. Other sources of media may also be responsible, Hmm. out of which newspapers do play an important role. इसमें जैसे हिमाचल का हम लोग दो तीन एग्जांपल ले सकते हैं. सबसे पहला जो एग्जांपल है हिमाचल का, जो स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, दैट वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर 2012, जी सर. 2012. उसमें काफी सारे सेक्टर्स की बात की गई है. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है, वाटर रिसोर्सेज की बात की गई है, क्रायोस्फीयर की बात की गई है, ग्लेशियर्स की बात की गई है. तो सभी सेक्टर्स को एम्पल स्पेस उसमें दिया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि अभी रिसेंटली शायद हिमाचल में काफी सारी जगहों पे मे बी हॉर्टिकल्चर प्लांटेशंस को लेकर काफी सारी जो है ट्री फेलिंग हुई, जी जो सर. न्यूज़पेपर्स में काफी हाईलाइट किया गया. स्पेशली मंडी की अगर बात करें तो काफी जगहों पे ये हाईलाइट हुआ. और दैट लेड टू द बैन ऑन ट्री फेलिंग ऑन द प्राइवेट लैंड बाय द गवर्नमेंट. अभी रिसेंटली आपने गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें कि हिमाचल में इवन अपने प्राइवेट लैंड पे आप 5 स्पीसीज उसमें नोटिफाई की गई हैं. उन 5 स्पीसीज के अलावा अगर प्राइवेट लैंड के ऊपर भी अगर आपको कोई पेड़ काटना है अपने पर्सनल यूज के लिए, देन यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट. इसका तीसरा जो एग्जांपल है दैट इज 2018 में एक बहुत ही सीवियर वाटर क्राइसिस शिमला में हुआ था. जी सर. शिमला की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो 43-44 mld के आसपास है, और उस टाइम जो वाटर अवेलेबिलिटी थी दैट रिड्यूस टू 17-18 mld. और काफी सारा न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, टीवी में, हर जगह जो है ये मैटर जो है हाईलाइट हुआ था. एंड दिस पर्टिकुलर न्यूज दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी इन शिमला, दैट इज शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड in the year 2019. And also a project was started to draw water from the Satluj river for Shimla.
So such type of examples are there. Yes. Yes, sir. Wonderful answer, sir. How do you think that the readers of newspapers in Himachal Pradesh perceive the credibility of climate change news? And the credibility, it varies depending upon the quality of reporting, the source of information, and their own understanding, means the reader's own understanding of the issue. So काफी सारे factors के ऊपर depend करती है. If the information is backed with ample scientific data, expert opinions are there, and the local context is also provided, then it definitely fosters credibility. But in case the reporting is poor, with poorly researched articles that are often lacking the local context and the scientific backup, then it may create confusions and mistrusts. Okay, sir. What role do you think that the newspapers play in countering misinformation or misconceptions about climate change? Newspapers do play a very crucial role. First is that they bridge the gap between the complex scientific information and the general public understanding. That is number one. Second, by featuring the expert opinions, they can help in debunking the myths and the confusions that are related with the climate change, to clarify the misunderstandings basically. Third, they should do the fact checking, and the false claims about the climate change, they should be refuted. And they may also offer a platform for informed discussions or debates among different stakeholders related climate related issues. Okay. Perfect, sir. How does newspaper reporting shape public understanding of climate change in Himachal Pradesh? I think they play a very pivotal role in shaping public understanding on climate change. First, through detailed coverage, they help the public to of climate change with their everyday life, like how agriculture patterns are being impacted by the climate change, how the water availability is impacted, or how these extreme weather events that are happening, they are related to climate change. By reporting the local effects of climate change, people may relate it foster a deeper sense of concern and responsibility pertaining to climate change. People may learn from success stories or best practices regarding climate change or mitigation or adaptation strategies. Then they may also inform about the government schemes or what the mitigation or adaptation measures we should adopt at community level. Perfect, sir. Um, Coming on to the next question, what strength do you think newspapers have over other media in informing the public about climate change in Himachal Pradesh? I think newspapers, they do provide in-depth or well-researched or factual reporting because they do have time for that research before publishing their news. Then the credibility, some newspapers do have credibility that they have established over the period of time. They have a wider reach. The audience is very wide. They do have local focus as well. And in case of newspapers, a permanent record is always available. Like अगर हम लोग बात करते हैं आज से 30 साल पहले, उस टाइम पर क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या बात होती थी, क्या न्यूज़पेपर्स में उस टाइम न्यूज आती थी, और आज से 30 साल बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा. तो इस तरह का जो एक परमानेंट रिकॉर्ड है वो न्यूज़पेपर्स में हमेशा जो है वो रहता है. Yes, sir. Sir, in your experience, have you noticed any bias in how climate change is reported? And if so, what are they? Yes, biasness may be there, and it may be due to various reasons or factors. It may be due to political affiliations, it may be due to their economic interest, or it may also be due to lack of specialized knowledge related to climate change.
फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक लिंक की अगर हम लोग बात करते हैं, देयर मे बी सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज that are emitting lot of carbon into the atmosphere due to their production or manufacturing process. So newspaper might not highlight those industries in their news. That may be one example. Then regional biases may also be there, since climate change is impacting all sectors, all states, all regions. So regional impacts may vary. So regional biases may also be there. Yeah. Okay, sir. Have you seen that newspaper reporting or coverage has affected people's willingness to take action on climate change? Yes, it do impacts, and it depends upon the quality of coverage actually. uh, Newspapers, they do raise awareness, they do motivate the people to take actions or to adopt sustainable strategies for climate change mitigation or adaptation. And people may basically learn from the best practices or the success stories that are disseminated by the newspapers. They may adopt those mitigation or adaptation measures in their day-to-day life. But in case that coverage is very technical, or it lacks clear call of action that what actually we need to do for mitigation or adaptation pertaining to climate change, then it may not resonate or as strongly with the public. Okay, sir. What strategies could improve the depth and accuracy of climate change reporting in newspapers? I'm asking from the point of view of an environmental expert. Okay. So first reason that I earlier mentioned, that the there should be greater collaborations between the journalists and the scientific communities, whether they are scientists or academicians. So these collaborations should be built up so that they can learn from each other. Second is regular training programs should be organized for journalists on environment or climate change related issues. जैसे कि इससे पहले जो है, आई वॉज वर्किंग विद द यूएनडीपी एंड द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सो there we do organize such type of media workshops on responsible journalism, or how the journalists, they should report the issues that are related to environment, related to biodiversity conservation or climate change. So such type of training programs, they should be regularly organized, ताकि जो scientific complexity है climate change issue की, वो journalist जो हैं उसको समझ सकें. Next, they should always do fact checking. Whatever they are reporting, they should check the scientific facts. What data is available, and what are the scientific reasons behind any phenomenon, whether it is agriculture, whether it is water resources, or whether it is extreme weather events. So scientific uska kya reason hai, that should be always checked. And local जो connections हैं वो build करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक लोकल कनेक्शंस बिल्ड नहीं करेंगे, लोग जो है उसको अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट नहीं कर पाएंगे. तो क्लाइमेट चेंज कैसे उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, और कैसे उनके जो एक्शंस हैं वो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो जो ब्रिज, जो गैप है, उसको ब्रिज करना जो है वो जरूरी है. जी सर. Coming on to our last question of this interview, how can journalists better integrate scientific data with real life experiences to make climate change reporting more relatable? I know sir, आपने इस पे काफी बारी इसकी चर्चा कर ली है. थोड़ा मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि हम कैसे बेटर इंटीग्रेट कर सकते हैं साइंटिफिक डेटा को. जी. तो जैसा इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बात की थी कि एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डाटा है उसको थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जा सके, ताकि उसको हम लोग रिलेट कर सकें अपनी डे टू डे लाइफ से. सेकंड, जो पर्सनल स्टोरीज हैं या केस स्टडीज हैं, उनको हाईलाइट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई अच्छा फॉरेस्टेशन का मॉडल वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने अडॉप्ट किया है, उसको प्रोपेगेट किया जा सकता है, डाइसेमिनेट किया जा सकता है. किस प्रकार से जो फॉरेस्ट हैं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज ऑल अबाउट कार्बन,
It is all about carbon balance in the atmosphere that basically affects our the heat budget of our Earth. So any process that affects the heat budget of Earth, that may be responsible for climate change. It may be anthropogenic or it may be natural as well. So किस प्रकार से जो फॉरेस्ट है वो कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, या इस तरह की कोई और स्टोरी है, किस तरह से किसी एरिया के जो लोग हैं वो वहाँ के लोकल जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या किस प्रकार से वहाँ के जो लोकल जो वाटर रिसोर्सेज है Mhm. डिसेमिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे विजुअल एड्स की, कि अगर आप एक रिटर्न में कोई न्यूज दे रहे हैं और दूसरी न्यूज आप दे रहे हैं जिसमें रिटर्न के साथ कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, या कोई चार्ट बना हुआ है, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। विजुअली वो चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती हैं, ज्यादा लंबे समय तक हमारी मेमोरी में रहती हैं, और ज्यादा कम से कम समय में हम वो चीजें समझ पाते हैं। तो इस तरह के जो टूल्स हैं उनको यूज किया जा सकता है। और तीसरा, जैसा पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो लैंग्वेज है वो जितनी सिंपल हो उतना बेटर है। बहुत ज्यादा हैवी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज का यूज हम ना करें, उसको सिंप्लीफाइड वे में न्यूज़पेपर्स में प्रेजेंट करें, ताकि जो मासीज हैं या जो हमारे रीडर्स हैं, क्योंकि उसमें सभी तरह के लोग आएंगे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी आएंगे और बहुत कम पढ़े लिखे भी आएंगे, तो सभी उसको समझ सकें। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मेरे ख्याल जर्नलिस्ट अगर अडॉप्ट करते हैं तो इस तरह की रिपोर्टिंग को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। Perfect, sir. As we conclude this insightful interview, again, sir, I would like to appreciate your time and expertise. Thank you so much, sir. I hope this discussion contributes to the better understanding of how we can bridge the gap between science and public perception through effective journalism. And as I said, that effective communication is the key for to derive climate action. And I hope this conversation sparks further dialogue and action towards meaningful climate communication. Once again, I truly appreciate your time and insights, and I look forward to staying connected and learning from your continued efforts in environmental conservation. Thank you, sir, and have a great day. श्योर मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।